Okay. So if I'm talking about velocity and acceleration of center of mass beta, position vector of the particle is given by RC is equals to your M1 R1 plus M2 R2 divided by M1 plus of your M2. If I'm differentiating this one with respect to time, drc divided by dt, that will give me the VCM. So VCM will be equal to your P net divided by mass. It means MVCM will be equal to your P net. Done better. The same way, if I differentiate the velocity with respect to time, that will give me the acceleration. It is F net divided by capital M. So M into your ACM will be equal to how much work beta? F net. Done. Sure. छोटा सा पॉइंट लिख लो यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस बेटा. F net कैसे लिख सकता हूँ बेटा? Can I write in terms of momentum? Newton's second law. F net is equals to your dp net, rate of change of momentum, divided by dt, isn't it? अगर F net 0 हो जाए, F net is 0, so acceleration of center of mass will become 0. अगर F net 0 हो रहा है, momentum will be constant. है कि नहीं? Momentum will be constant. अगर momentum constant हो रहा है, that means VCM, velocity of center of mass, will also be your constant. If F net is 0, acceleration of center of mass is 0, and momentum is constant, the velocity of center of mass will be your constant. Done. If external force acting on a system is 0, acceleration of the center of mass will be 0. So momentum will be your constant. If momentum is constant, velocity of center of mass will also remain for me constant. From the formula of the Newton's second law, F net is equals to your dp divided by dt. Done beta? Clear? See this question, madam. Two particles A and B of mass 1 kg and 2 kg respectively are projected in the directions shown in figure with speeds, good question, but with speeds UA is equals to 200 meter per second and UB is equals to 50 meter per second. Initially, they were 90 meters apart. Find the maximum height find the maximum height attained by the center of mass of particle. Assume acceleration due to gravity to be constant. And GQ value, we take this one as 10 meter per second square. Then we've got two particles here, better like this.
So here there is one particle, and here there is one particle from ground. Okay. The distance is right now for me 90 meters. Okay. So two particles A and B. Let's say this is your A and this one is your B. Of masses 1 kg and 2 kg. तो इसका mass हो गया 1 kg and इसका mass हो गया 2 kg. Are projected in the direction shown in the figure. यानी this has been projected vertically upward beta with velocity UA, and this is projected down with velocity UB. Done. So now if mass is more here, the center of mass will be somewhere here, nearer to the larger mass. So this will be your center of mass. So the center of mass initially is at this distance before striking, R1. And the center of mass moving in the upward direction. UC is moving in the upward direction. Initially, they were 90 meters apart. Velocity of A is 200 meters and velocity of B is 50 meters. Find the maximum height attained by the center of particle. Like say this particle after striking is been moving in the upward direction. यानी इसका center of mass कितना ऊपर गया है. Now read the question carefully. Two particles A and B of masses 1 kg and 2 kg respectively are projected in the direction shown in the figure with the speeds UA is equals to 200 meter per second, UB is equals to 50 meter per second. Initially, they were 90 meters apart. Find the maximum height attained by the center of mass of the particle. Assume acceleration due to gravity to be a constant. Okay. Like say here, if I'm writing R1, initially, R1 is equals to mass of your B into your distance between them. That is nothing but equal to your 90 divided by MA plus of your MB. Mass of your B is how much beta? 2 into 90 divided by 2 plus 1. So it will be equal to 180 divided by 3. That means this will be equal to 60 meters. The center of mass is a distance of your, from the first particle, it is a distance of your 60 centimeters. Done better? Center of mass from the first particle is equal to that much. Then what is the velocity of the center of mass? UC is equals to your mass of your A, velocity of your A plus mass of your B, velocity of the B divided by total mass, mass of your A plus mass of your B. Then, so mass of your A is nothing but 1 into 2. That means this will be 200 minus this will be opposite direction. So it is your 2 into your 50. That is 100 divided by 3. That means 100, 200 minus 100, 100 divided by 3. This is the velocity of center of mass. Then acceleration of center of mass beta. AC will be equal to your MA, acceleration of your A plus of your MB, acceleration of the B divided by mass of your A plus mass of your B. Both of them under gravity beta. So this will be equal to your mass of your A is how much for me? 1 into G. This is plus 2 into this is minus G divided by 3. That means if I take this value here right now, this will be equal to how much beta? G will be common into minus G, I'll take it out. 1 plus 2 divided by 3. So this 3 will get cancelled. This will be equal to minus 2. Done. From kinematic equation, from VC square is equals to UC square plus 2 into your AC into your H. Isn't it? So velocity of center of mass initially will always be constant. That will be equal to 0. UC value I got as 100 by 3 ka whole square plus 2. Acceleration due to gravity is minus G into H. So from this one I can calculate the H. So this will be equal to your 100 by 3 ka whole square is equals to, ये minus है ना, इधर चले जाएगा तो 2G into your H. That, so it is 100 into 100 divided by 3 into 3 is 9. That is equals 2 into G value is 10 into H. This one and this one will get cancelled. So it is 100 into 10. That means 1000 by 9.
isn't it? That means this will become for me 1000 divided by 2 nines are 18 is equals to h. So height will be equal to how much? If I simplify it, h is equals to 18 5 is 55.55 meters height. Okay. तो पूछा क्या प्रॉब्लम है, देखो बेटा मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द सेंटर ऑफ मास, यानी ऑलरेडी सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे है बेटा 90 है, यानी h वैल्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी maximum height of center of mass will be equal to r1 plus h. r1 ऑलरेडी कितना है मेरे को 60 प्लस ये हो गया 55.55, यानी this will be equal to 115.55 meters. So this will be the answer. Very good. हो गया? Are you clear with this one? देख लीजिए क्वेश्चन को फिर भी एक बार.
नेक्स्ट वन देख लीजिए बेटा, सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्लैट geometrical figures. Okay. तो मान के चलो टी शेप का एक स्ट्रक्चर है बेटा, और ये कोऑर्डिनेट है 0, और ईच ऑफ दिस साइड्स आर गिवन फॉर मी. तो मान के चलो दिस इज ए, दिस इज योर 2a, दिस इज आल्सो 2a, दिस टोटल इज योर 5a, एंड दिस वन इज आल्सो योर a. ठीक है ना. तो अब इसका देखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस पार्ट लूंगा मैं, इस पार्ट के लिए सेंटर ऑफ मास विल बी समवेयर हियर 1, और इस पार्ट के लिए भी सेंटर ऑफ मास विल बी समवेयर हियर, दैट विल बी इक्वल टू 2. इसका मास कितना बन जाएगा बेटा, मास इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी मास इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k इनटू एरिया. एरिया विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, 5 into your a square. This is length into breadth, 5a into your a, यानी this will be equal to k into 5a square. और इसका मास कितना बन जाएगा बेटा, m2 is equals, ये मान के चलो m1 है, m2 is equals to some constant k, length is 4a into breadth is a, यानी this will be equal to k into 4a square. ठीक है ना. अब देखो इसका सेंटर ऑफ मास कहां से कहां तक होगा बेटा, ये भी डिस्टेंस कितना है, मान के चलो 4a, isn't it? तो इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पर है, तो यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस कितना बन जाएगा बेटा, ये वाला बन जाएगा 2a. ठीक है ना. फॉर द वर्टिकल शेप द सेंटर ऑफ मास विल बी योर 2a, और हॉरिजॉन्टल पार्ट इसके लिए सेंटर ऑफ मास कितना बन जाएगा बेटा, 2a प्लस ऑफ योर दिस a, यानी दिस विल बिकम फॉर मी 3a. ठीक है ना. तो आई कैन राइट हियर राइट नाउ, center of mass of the system xc will be equal to your m1 x1 plus of your m2 x2 divided by m1 plus m2, isn't it? और इसी तरह से yc, that will be equal to your m1 y1 plus of your m2 y2 divided by m1 plus m2. ठीक है ना. इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया बेटा, x1 कामा y1, x1 कामा y1, और इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 कामा y2. क्लियर. m1 है मेरे पास, x1 की वैल्यू आ गई, m1 आ गया मेरे पास, x1 की वैल्यू कितनी है 3a, और y1 की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा 5a. उसी तरह से x2 की वैल्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा 3a, and y2 की वैल्यू will be equal to 2a. Done. So this will be equal to your m1. m1 की वैल्यू कितनी है, k into 5a square into ma, that is 3a, plus m2. m2 is equal to how much for me, k into your 4a square divided by, so this will be equal to your k into 5a square plus k into 4a square. So that will be equal to your, ये कितना बन जाएगा बेटा, 5 3 is 15, so k into 15a cube plus k into 4a square, k into 4a square into x2 की भी वैल्यू थी ना, x2 की वैल्यू कितनी है 3a, सॉरी, तो ये बन जाएगा मेरे को यहाँ पर 12, so 12 into your a cube divided by k common, a square common, 5 plus 4 9, 9k a square, हाँ a square plus a cube है ना. ठीक है ना, because this one is a square, a power 4, sorry 5a square है ना ये, sorry. So this will be equal to your k
a square common into 5 plus 4. Okay, so this will be equal to 9. तो यहाँ पर मैं इसमें k कॉमन है, a क्यूब भी कॉमन है, so it will be 15 plus 12 divided by k into your a square into 9. so ये k चले गया, क्यूब में से स्क्वायर चले गया, so ये बना कितना बेटा 27 into your a divided by 9. डन, आया सभी को? क्लियर? सो ऐसे ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द बॉडीज के लिए आप सिर्फ take the points and try to write the coordinates and write the values of your XCM and as well as of your YCM. Any doubt? I hope with this we have completed complete center of mass का पूरा concepts. Now आप लोगों को थोड़ा बहुत numericals करना है. I'll send you some assignments related to this one. So please try to complete the assignments related to the center of mass. इसके बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है? You please let me know. Then accordingly I'll try to start with that topic. नीट के बच्चे रहे तो नीट के PYQs खत्म कर लीजिए और जेई मेंस के बच्चे रहे तो जेई मेंस के PYQs खत्म कर लीजिए एक बार. ठीक है? अच्छा, तो डेरिवेशंस करना है आप लोग को. ठीक है, कल डेरिवेशंस कर लेंगे फिर. So tomorrow's class will try to keep further derivations of some regular bodies of center of mass. ठीक है? Yeah, NEET students can also join बेटा, पर एक sort of revision हो जाएगा. इसके साथ में प्रॉब्लम्स भी करा लूंगा थोड़े बहुत. So it will be helpful for you. सुन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सुन के रख लेने में क्या प्रॉब्लम है. जैसा हेलो कौन है, सॉलिड कौन के लिए h/4 कैसा आया, h/3 कैसा आया,
एक बार करके रख लीजिए, ये प्रॉब्लम्स वो कर लीजिए, और आज आप लोग नीट के प्रॉब्लम्स खत्म कर लीजिए सेंटर ऑफ मास के। 10-12 ही क्वेश्चन है शायद, आप लोग के पास नीट की बुक्स होंगे। सो कंप्लीट द PYQs ऑफ योर सेंटर ऑफ मास। कल डेरिवेशंस करेंगे, फिर उसके बाद कौन सा टॉपिक करना है प्लीज लेट मी नो। इसके बाद कौन सा टॉपिक करना है बेटा? कल तो डेरिवेशंस कर लेंगे, फिर उसके बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है? ग्रुप में डाल दीजिए बेटा मेरे को। रोटेशंस करना है, ठीक है। ओके, आई सी इट आउट बेटा, मेरे पास तो सर भेजे सो है, आई चेक इट आउट। नहीं, मेरे को तो भेजे नहीं है, आप लोग एक बार लिखे फिर भी एक बार ग्रुप में डाल दीजिए बेटा आप लोग, ठीक है ना? एक तो खाली सेंटर ऑफ मास बोल के बोल दिए थे, मुझे ऐसा लिख के तो नहीं दिए, तो एक बार आप लोग को जो टॉपिक सीक्वेंस में चाहिए सीक्वेंस का एक बार लिख के मेरे दे दीजिए, ठीक है?